amphoteric oxides. And they are two oxides we have taken here, Al2O3, and other is zinc oxide, aluminum oxide, zinc oxide, alumina and zinc oxide. यदि amphoteric हैं, then their reaction is possible with acid as well as with base. First category, number 1, reaction with acids. पहले Al2O3 की रिएक्शन कराते हैं. When Al2O3 come contact to any suitable acid just like HCl, then it used to form AlCl3. Used to form AlCl3 and H2O. It is neutralization reaction. Because you know, in case of you have already collected information about neutralization reaction. When any acid react with any base, neutralization reaction used to perform, and in this reaction salt and water is formed, and everything is going to happen same in this reaction. This Al2O3 come contact to HCl, then this salt and water is formed. तो चूंकि एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, अतः इसका नेचर कैसा है? यहां पर बेसिक है, क्योंकि एसिड के साथ रिएक्शन करने वाला बेसिक होता है. एंड यू हैव टू बैलेंस दिस रिएक्शन बाय योरसेल्फ फॉर योर कंफर्मेशन, राइट? एंड बाय द सेम वे you have to also perform the reaction of zinc oxide with acid. It will also react ZnCl2 and H2O. Balance by yourself. तो देखिए जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिना both are going to perform their reaction with acid to form salt and water. Here zinc is also present in basic state. यहां पे जिंक ऑक्साइड का नेचर बेसिक है क्योंकि एसिड से रिएक्शन शो कर. ओके, एंड नाउ वी हैव टू प्रूव देयर रिएक्शन विद बेसिस. यदि दोनों एम्फोटेरिक है तो एसिड से तो रिएक्शन मैंने प्रूव कर दिया, एंड नाउ आई हैव टू प्रूव देयर रिएक्शन विद बेसिस आल्सो. नाउ we have taken suitable base just like NaOH as Al2O3 plus NaOH. Then it will form NaAlO2. NaAlO2 plus hydrogen gas going to release NaAlO2 plus H2. Clear? In this case, since it is the base, NaOH, you know already it is considered as base, and when it is the base, then it is now acidic in nature. जब NaOH यहाँ पे बेस है तो Al2O3 का नेचर एसिडिक होगा. एंड प्रोडक्ट NaAlO2 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, इस कंपाउंड का नेम है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट. सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, राइट? क्लियर? And the current product you can notice, and by the same way, yes, and by the same way, so you can see here that both the metal oxides are amphoteric and used to perform their reaction with acid. By the same way, now reaction with bases, NaOH here a base, it will also perform neutralization reaction and salt and water, salt and water, because in case of neutralization reaction
salt and water is formed. And by the same way, for the reaction of जिंक ऑक्साइड, अब जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन भी कराते हैं किसके साथ? बाय द सेम वे जिंक ऑक्साइड आल्सो रिएक्ट विद NaOH. This is the base. Then अब since it is a base, and if zinc oxide used to perform its reaction with base, then no doubt it will represent its acidic nature. And here reaction Na2ZnO2 or plus H2O. Na2ZnO2 plus H2O. This is the zinc oxide. And its nature is acidic. Because this is the base. और जो कंपाउंड बेस रिएक्शन करे वो एसिडिक ही होगा. And its name is sodium zincate. Okay? Balancing do by yourself. Means these aluminium and zinc are the metals which used to perform their reaction with oxygen on heating. And their oxides are amphoteric in nature. Clear? And there are some metals. Next category. There are some metal, okay, which can't start burning with oxygen on heating. Means next category में कुछ ऐसी मेटल्स हैं जिनको ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लाने पर जब हीट करते हैं तो बर्न नहीं करते हैं, बर्निंग उनकी नहीं होती है. अभी तक ये बर्निंग स्टेट में पहुंच जाते थे. There are some metals which can't burn on heating with oxygen, but at higher temperature, these used to produce a bright light. जब ऑक्सीजन कांटेक्ट में आकर उनको स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर पर, हाइयर टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो एक ब्राइट लाइट रिप्रेजेंट करते हैं, बट देयर बर्निंग इज नॉट पॉसिबल. एंड सच मेटल इज फॉर एग्जाम्पल एज आयरन. As iron. This is the fourth categories of metals. Means reaction of iron and copper with O2. Means it is also universal truth that iron and copper can't perform their reaction strongly at low temperature, and it is also clear that on account of heating to these metal with oxygen, these can't burn but used to produce a bright light at higher temperature to form their oxide. Although iron ordinary temperature पर रिएक्शन करके फेरस ऑक्साइड बना लेता है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर भी कर लेगा, लेकिन जब इसको हाइयर टेम्परेचर में बर्न करने का प्रयास करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो इसकी बर्निंग तो नहीं होती है. इफेक्टिव ऑक्साइड बनने के साथ साथ ब्राइट लाइट इज गोइंग टू प्रोड्यूस Fe plus O2 at higher temperature. Then it used to form Fe3O4. Balancing do by yourself. I hope you can balance. If there is a problem, 2 place 2 here. 3 2 jar 6, place 6 here. And oxygen 4 2 jar 8, place 4 here. अब जब स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे तो फेरस ऑक्साइड नहीं बना, FeO नहीं है, Fe3O4 बनेगा और एक ब्राइट फ्लेम निकलेगी. एंड इट्स नेम इज फेरिक oxide. Name of this oxide is ferropheric oxide. क्यों नाम पड़ा इसका ferropheric oxide? Because it is the combination of FeO plus Fe2O3. FeO और FeO2O3
ये है फेरस ऑक्साइड और ये है फेरिक ऑक्साइड, दोनों को कंबाइंड करते हैं तो ये बनता है Fe3O4. दैट्स व्हाई इट्स नेम इज गिवन ferrospheric oxide, because this is the ferrous oxide and this one is the ferric oxide. When both combined with each other, then the formation of ferrospheric oxide take place. Okay, by the same way, when copper is allowed to heat with oxygen at higher temperature, then there is no chance of burning of copper. copper जलेगा नहीं, मैग्नीशियम सोडियम पोटेशियम की तरह जलेगा नहीं. Okay, but a bright light used to appear and formation of its oxide take place, CuO placed to here, and its name is copper oxide. Clear? This is the fourth category of metal. Without burning, they used to form their effective oxide at higher temperature. And last category of metal, you know, A, B, C, D, E. E. Reaction of least reactive metal. Least reactive metal with O2. This is the last one. And you know, there are some metals which are least reactive in nature. Those can't perform their reaction with oxygen at any cost. Neither at ordinary temperature, not at room temperature, not at higher temperature. चाहे जितना टेम्परेचर बढ़ा दे, चाहे जितना हीट करे, बस least reactive metal can't perform their reaction with oxygen. And these metals are, you know, for example, as silver, platinum, gold. सिल्वर है, प्लेटिनम है, गोल्ड है. These are least reactive metal. Least reactive metals. And can't perform their reaction with oxygen at any cost. Okay? तो आज अपने इस वीडियो लेक्चर में I have discussed the reaction of metals with oxygen to form their oxide, reaction of metals, reaction of different types of metals with oxygen. इस कैटेगरी मैंने डिस्कस किया, कुछ मेटल लो टेम्परेचर पर रिएक्शन करते हैं, कुछ मेटल हायर टेम्परेचर पर रिएक्शन करते हैं, कुछ मेटल्स हायर टेम्परेचर ऑक्सीजन के साथ एक पर्टिकुलर फ्लेम के साथ जलते हैं. बट मोस्ट ऑफ द मेटल्स, देयर आर सम मेटल्स which can't burn with oxygen to but form their oxide. मैंने ये भी डिस्कस किया, कुछ मेटल हैं जो रिएक्शन ही नहीं करते हैं. मोस्टली मेटल्स ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, बट सम आर एम्फोटेरिक इन नेचर. देयर प्रॉपर्टीज आई हैव डिस्कस्ड प्रॉपरली. ओके, इस लेक्चर में यहीं तक डिस्कस करेंगे. थैंक यू.